हेलो इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट को स्वागत। अब आम मु एशियन बुक रो 3 नंबर चैप्टर नहीं आसी। अब हमर एशियन बुक रो हमर 1 नंबर 2 नंबर चैप्टर शेष हेतला। हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर शेष हेतला। एबे थर्ड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हो हम कल हमर जो ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आ हमर हेतला टूल्स शेष हेतला। एटा भी हम कोन थर्ड चैप्टर नहीं आसे। एटा कोन ना कारपेंटरी। कारपेंटरी माने कोन टूल्स रो भी एटा किछ अंश अछि हैला। टूल्स को नै कि गोट कारपेंटरी चैप्टर कराई सेकंड दिन हम टूल्स पढोतले। ये टूल्स रे किछि अछि मिसी कि एटा अछि कारपेंटरी हम पढेबा से टूल्स रो हैला। तापर हम जिबा एमसीक्यू पढेबा रे हमर 1 नंबर क्वेश्चन जिबा। 1 नंबर क्वेश्चन हैला कोन द साइज ऑफ हैमर इज स्पेसिफिक बाय इट इज। से कोन कहले देखो कहले क्वेश्चन कहला द साइज ऑफ हैमर इज स्पेसिफाई इट इज माने ये कहले जो हैमर जो साइज टा कोन हो। ऑप्शन ए कोन कहला ना लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ऑप्शन बी कोन कहला ना डायमीटर ऑफ अ फेस। ऑप्शन सी कोन कहला ना वेट ऑफ द हैमर। ऑप्शन डी कोन कहला हाइट ऑफ द हेड। ले क्वेश्चन आउ तुम पढ़ि देखो द साइज ऑफ अ हैमर इज स्पेसिफाइड बाय इट इज। ऑप्शन ए कहला लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ऑप्शन बी कहला डायमीटर ऑफ द फेस। ऑप्शन सी कहला वेट ऑफ द हैमर। ऑप्शन डी कोन कहला ना हाइट ऑफ द हेड। ऑप्शन ए कोन ऑप्शन ए को नंबर आंसर होची ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। बस 2 नंबर जिया 2 नंबर कोन कहला ना व्हिच टाइप ऑफ फाइल यू वुड बी सिलेक्ट फॉर फिलिंग वुडन प्लैंक। ना व्हिच टाइप ऑफ फाइल को फाइल हम यूज करछि सिलेक्ट द फिलिंग ऑफ वुडन प्लैंक रे जो हम काठ रे को फाइल जो हम होल करबार अछि सेटा को फाइल हम यूज करछि। ऑप्शन ए कहला राउट फाइल। ऑप्शन बी कोन कहला ना रैप कट फाइल। ऑप्शन सी कोन कहला बास्टर्ड फाइल। ऑप्शन डी कोन कहला सिंगल कट फाइल। 2 नंबर करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कोन ना रैप कट फाइल। 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहला ना व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग स्क्वायर होल इज माइका शीट यूज ऑन वुडन बोर्ड इलेक्ट्रिकल वायर। कोन कहला ना व्हिच टूल यूज करे केउ टूल हम यूज करछि कटिंग स्क्वायर जो स्क्वायर टाइप रो होल करछि हम माइका शीट रे वुडन जो काठर बोर्ड रे जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड के हम वायरिंग पई सेटा को बा यूज करू हैला हम स्क्वायर करके। ऑप्शन ए कोन कहला टेंडन स। ऑप्शन बी कोन कहला ना के होल स। ऑप्शन सी कोन कहला हार्ट स। ऑप्शन डी कोन कहला कारपेंटर स। 3 नंबर करेक्ट आंसर कोन हो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर के होल स। तापर 4 नंबर क्वेश्चन जीवा व्हिच टाइप ऑफ चिजेल यूज फॉर मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इज वुडन। कोन कहला क्वेश्चन आउत देखो व्हिच टाइप ऑफ चिजेल माने को टाइप रो चिजेल हम यूज करछि मेकिंग रेक्टेंगुलर होल ऑफ वुडन। रेक्टेंगुलर जो हमें गोटे चिजेलटा हमें को टाइप रो चिजेल यूज करछि मार्किंग कला आसु रेक्टेंगुलर इपले गोटे रेक्टेंगुलर ना रेक्टेंगुलर जो होल करिया पे को चिजेल हम यूज करछि। ऑप्शन ए कोन कहला पार्टिस चिजेल। ऑप्शन बी कोन कहला पेयरिंग चिजेल। ऑप्शन सी कहला फार्मर चिजेल। ऑप्शन बी कहला कोन ना बेल फार्मर चिजेल। ऑप्शन हमर 4 नंबर करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर। तासे आसिला 5 नंबर क्वेश्चन द कटिंग ब्लेड ऑफ जैक प्लान इज मेड ऑफ कोन कहला आउट क्वेश्चन द कटिंग ब्लेड जैक्स ऑफ प्लेन जो हमर कटिंग ब्लेड जो ब्लेड नै कि से को मटेरियल ली पचाची। ऑप्शन ए कोन कहला हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन बी कोन कहला हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन सी कोन कहला टंगस्टन स्टील। ऑप्शन डी कोन कहला अलाउ स्टील। 5 नंबर करेक्ट आंसर कोन ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर टंगस्टन स्टील। एबे 6 नंबर जिबा 6 नंबर कोन कहला व्हिच टाइप ऑफ बेंच प्लेन इज सुटेबल टू प्लेन इज स्मॉल वुडन पाइप्स। कोन कहला व्हिच टाइप ऑफ बेंच हमर जो बेंच जो हमर जो फाइलिंग करछ जो बेंचटा कहला व्हिच टाइप ऑफ बेंच केउन बेंच सुटेबल प्लेन इज स्मॉल वुडन पाइप माने छोट छोट काठ केमती पाइस करबा। ऑप्शन ए कोन कहला जैक्स प्लेन। ऑप्शन बी कोन कहला स्मूथिंग प्लेन। ऑप्शन सी कोन कहला कोहेरेशन प्लेन। ऑप्शन डी कोन कहला रैबट प्लेन किंतु करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर स्मूथिंग प्लेन। तापर हम जिया 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कोन कहला देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन कहला व्हाट इज द टाइप ऑफ चिजेल यू वुड सिलेक्ट द स्क्वायरिंग ऑफ अ कॉर्नर। कोन कहला आउत पडिया व्हिच टाइप ऑफ चिजेल कोन टाइप ऑफ चिजेल यू सिलेक्ट कराउची स्क्वायरिंग कॉर्नर करबा जो स्क्वायर टाइप रे करिया पई। ऑप्शन ए कोन कहला क्रॉस कट चिजेल। ऑप्शन बी कोन कहला हाफ राउंड नोच चिजेल।
ऑप्शन सी कौन कहला डायमंड पॉइंट चिजेल, ऑप्शन डी कौन कहला वेब चिजेल। करेक्ट आंसर कौन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर डायमंड पॉइंट चिजेल। 8 नंबर देगा there are several application of a trash square what cannot be done by using a trash square कौन कहला आउत करिया there are several application by trash square what it cannot do is using a square। ऑप्शन ए कौन कहला चेक पैरेलल ऑफ वर्कपीस सरफेस, ऑप्शन बी कहला चेक स्क्वायरनेस ऑफ फाइल्ड सरफेस, ऑप्शन सी कहला चेक फ्लैटनेस सरफेस, ऑप्शन डी कौन कहला मार्क लाइन ऑफ 90 डिग्री ऑफ द एज ऑफ द वर्क प्लेस। यार 8 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर चेक पैरेलल ऑफ वर्क प्लेस सरफेस। 9 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन कहला the pitch of the wood screw in the distance, the pitch of the wood screw is the distance। ऑप्शन ए कहला from the tip the end of a threaded person, ऑप्शन बी कहला between the adjacent thread, ऑप्शन सी कहला from the head to the unheaded person, ऑप्शन डी कहला from the head to the tip। ऑप्शन करेक्ट आंसर द 9 नंबर बी between the adjacent thread। तापर आसला which type of half lap joint with the figure, जो प्लान देखो एटा जो गोटे फिगरटा अछि से कोन कहला ता हाफ लैप एटा को लैप जॉइंट छ त को लैप जॉइंट। ऑप्शन माने ए कोन कहला ना एंड लैप जॉइंट, ऑप्शन बी कहला क्रॉस लैप जॉइंट, ऑप्शन सी कहला मिडिल लैप जॉइंट, ऑप्शन बी डी कहला कोऑर्डिनेट जॉइंट। ले करेक्ट आंसर कोन हो ऑप्शन बी हबो द करेक्ट आंसर क्रॉस लैप जॉइंट। एटा देखो एटा हमर एटा क्रॉस वैल्यू कहउछि ना नै एटा से टाइप रे सिंबलटा अछि एटा किछि भाबिया पड़िबोनी एटा क्रॉस लैप जॉइंट बोली ऑप्शन मारिया। तापर 11 नंबर क्वेश्चन जीवा। 11 नंबर क्वेश्चन कोन कहला मिडिल लैप टाइप हाफ लैप जॉइंट यूज होया ना मिडिल लैप जॉइंट हाफ लैप जॉइंट यूज होया। ऑप्शन ए कहला टू पार्ट ऑफ द फ्रेम क्रॉस ईच अदर, ऑप्शन बी कहला वन पार्ट ऑफ द जॉब मीट अनदर पार्ट, ऑप्शन सी कौन कहला टू पार्ट ऑफ द जॉब क्रॉस ईच अदर ऑफ द एंड, ऑप्शन डी कौन कहला टू पार्ट ऑफ द जॉब मीट मीन्स द एंड। ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑफ द करेक्ट आंसर टू पार्ट ऑफ द जॉब मीट मीन्स द एंड। ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन जा। 12 नंबर क्वेश्चन कौन कहला which type of a half lamp joint use where one part of the job meet another part of the same distance from the end कौन कहला आउथरे पड़िबा which type of a half lamp joint use where one part of the job meet another part of the same distance from the end। ऑप्शन ए कौन कहला एंड लैप जॉइंट, ऑप्शन बी कौन कहला मिडिल लैप जॉइंट, ऑप्शन सी कहला क्रॉस लैप जॉइंट, ऑप्शन डी कौन कहला कोऑर्डिनेट लैप जॉइंट। हमरा 12 नंबर करेक्ट आंसर को ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर मिडिल लैप जॉइंट। तापर जीवा 13 नंबर which type of chisel यूज फॉर क्लीन शार्प कॉर्नेट ऑफ द वुड, को टाइप रे चिजेल यूज करा होची क्लीन शार्प कॉर्नेट ऑफ द वुडन फ्रेम जो काठ मानव ना फॉर्मट चिजेल, ऑप्शन बी कहला बेवेल एज फॉर्मट चिजेल, ऑप्शन सी कहला पार्निंग चिजेल, ऑप्शन डी कौन कहला मास्टिंग चिजेल। 13 नंबर करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर कोनटा ना बेवेल एज फॉर्मट चिजेल। तापर आसीबा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कौन कहला which type of chisel यूज फॉर फिशिंग ऑफ वुडन जॉइंट, को टाइप रो चिजेल यूज करा होची फिशिंग द वुडन जॉइंट जो हम काठर जॉइंट जो करा होची फिशिंग करा होची को चिजेल यूज रखा ना फॉर्मट चिजेल, ऑप्शन बी कहला बेवेल एज फॉर्मट चिजेल, ऑप्शन सी कहला पारिंग चिजेल, ऑप्शन डी कहला पार्टिस चिजेल। 14 नंबर करेक्ट आंसर कौन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर प्यारिंग चिजेल। 15 नंबर हो गया। 15 नंबर कहला which type of a hammer is used for extracting the nail out of the wooden, कौन कहला ना which type of a hammer कोन टाइप रे hammer हम यूज करछे एक्सटर्नल जो नट बोल्ट जो हमर अछि नट आउट ऑफ द वुडन जो काठरे जो नट लागुची नेल जो कंटा सेटा को hammer द्वारा होउची ना बॉल पिन hammer ना क्रॉस पिन hammer ना क्रॉस पिन hammer ना स्ट्रेट पिन hammer। 15 नंबर करेक्ट आंसर कोन ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर क्रॉस पिन hammer। तब हम जो 16 नंबर क्वेश्चन कौन देछि ना which type of a hammer is used for extracting the nail out of the wooden, एट से वाला क्वेश्चन
ना हुज केउं टाइप रे हामर यूज करा होची एक्सटेंडिंग जो कंटा भी यूज करूचे आउट ऑफ ऑर्डर रे सबको हामर बा हमर बॉल पिन हामर ऑप्शन बी कहला क्रॉस पिन हामर ऑप्शन सी कहला ऑप्शन सी कहला स्ट्रेंथ पिन हामर ऑप्शन डी कहला क्रो हामर 16 नंबर करेक्ट आंसर कौन हबो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर क्रो पिन हामर तापर आसिया 17 नंबर क्वेश्चन द हैमर ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ a screwdriver used for where normal screwdriver cannot be applied कौन कहला आउथरे कुछ द नेम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ a screwdriver कहला को टाइप रो स्पेसिफिक जो स्क्रूड्राइवर यूज को ना यूज करा होची नॉर्मल स्क्रूड्राइवर कैनॉट बी applied ऑप्शन ए कौन कहला लैंडन पैटर्न स्क्रूड्राइवर ऑप्शन बी कहला कैबिनेट पैटर्न स्क्रूड्राइवर ऑप्शन सी कहला इलेक्ट्रिकल पैटर्न स्क्रूड्राइवर ऑप्शन डी कहला क्रैंकटन स्क्रूड्राइवर 17 नंबर करेक्ट आंसर कौन हबो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर क्रैंकटन स्क्रूड्राइवर तापर जीवा हमें 18 नंबर क्वेश्चन द टाइप ऑफ फाइल यूज ऑफ वुडन वार कहला क्यों टाइप रो फाइल हम यूज करा जो काठर जो काम करला बेले को टाइप सिंगल कट फाइल ऑप्शन बी कहला रैस्ट कट फाइल ऑप्शन सी कहला डबल कट फाइल ऑप्शन डी कहला ऑल ऑफ द एबव 18 नंबर करेक्ट आंसर कोनटा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर रैस्ट कट फाइल तापर आसबा 19 नंबर क्वेश्चन कोन कहला द कैपिलर मीन्स ऑफ मेजरिंग width of the slot कहला द कैलिपर means of measuring with the slot ऑप्शन ए कहला इनसाइड कैलिपर ऑप्शन बी कहला जॉनी कैलिपर ऑप्शन सी कहला ओल्ड लेग कैलिपर ऑप्शन डी कहला आउटसाइड कैलिपर 19 नंबर करेक्ट आंसर कौन हबो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इनसाइड कैलिपर तापर 20 नंबर जीवा 20 नंबर ए रिप्स माने कौन कहला ऑप्शन ए कहला इज यूज फॉर कटिंग अलोंग द ग्रेन ऑप्शन बी कौन कहला हैज द नैरो ब्लेड विथ द टू वुडन हैंडल ऑप्शन सी कौन कहला इट इज द टू मैन सॉ ऑप्शन डी कौन कहला ऑल ऑफ द एबव 20 नंबर करेक्ट आंसर कौन हबो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इज यूज फॉर कटिंग अलोंग द ग्रेन तापर आसिया पिलान देखो हमर जो 3 नंबर थिला चैप्टर कोन कार्पेंट्री हमर एटा मात्र 20 टा क्वेश्चन थिला 20 टा क्वेश्चन के हम बहुत कम समय जीवो बेली ताको हम आउट चैप्टर आर करते हम 4 नंबर चैप्टर हमर जो एशियन बुक रो 4 नंबर चैप्टर हम कहिची 32 टा चैप्टर हम कंप्लीट करिवार वर्तमान हम 4 नंबर चैप्टर को कंप्लीट होबो आसिले एटा जो हम 3 नंबर 20 टा थिला बेली म एटा ऐड कर देची 4 नंबर चैप्टर ना शीट मेटल वार हला माने को मेटल हम वर्क करूची माने जो हम इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल जेतु गोटे वायरिंग फायरिंग करे को मेटल सब यूज करा हम सेइथरा में पढिबा हला 4 नंबर को 4 नंबर चैप्टर हम जीवा 4 नंबर चैप्टर जीवा 1 नंबर क्वेश्चन प्रथम जीवा आसो देखिबा देछि कोन द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इंडिकेट बाय ए सीरीज ऑफ नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज कोन कहला द थिकनेस मोटर शीट मेटल इंडिकेट कुछ बाय सीरीज ऑफ नंबर व्हिच इज कॉल्ड ऑप्शन ए कोन कहला नंबर साइज ऑप्शन बी कौन कहला गॉज ऑप्शन सी कौन कहला स्टैंडर्ड साइज ऑप्शन डी कौन कहला नॉन ऑफ दी एबव हमर 1 नंबर करेक्ट आंसर कौन हबो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर गॉज हमर 2 नंबर क्वेश्चन कौन कहला 2 नंबर क्वेश्चन कहला बेंट स्नाइप इज यूज फॉर कौन कहला बेंट स्नाइप इज यूज फॉर ऑप्शन ए कहला रिमूविंग the bar option b कौन कहला making hole on the sheet option c कहला bending the sheet option d कौन कहला ना cutting the sheet along curved line 2 नंबर करेक्ट आंसर कौन हबो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर कोनटा ना cutting the sheet along curved line तापर आसीबा हम 3 नंबर क्वेश्चन कहला which one of the following the purpose of using hand gloves is sheet metal work कौन कहला देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित जो कोटा गोटे काम होची पर्पस माने काम यूजिंग जो करा होची हैंड ग्लोव्स जो हम हाथ रे जो ग्लोव्स लगाउची शीट मेटल वर्क तार काम हो ना द लॉक द ग्लोव ऑफ सी माने ग्लोव सी ऑप्शन बी कहला टू अनलॉक द ग्लोव ऑफ सी ऑप्शन सी कौन कहला टू स्ट्रिक द शीट ऑप्शन डी कहला टू होल्ड द शीट ऑफ पोजीशन
3 नंबर करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन द करेक्ट आंसर ए ऑफ द करेक्ट आंसर ना टू लुक द ग्रोव स्टीप 4 नंबर क्वेश्चन मैलेट इज मेड ऑफ हम जो गोटे मैलेट बेला गोटे जिनस अछि ता कोथिते ना लीड ना ब्रास ना हार्डवुड ना कास्ट आयरन 4 नंबर क्वेश्चन कोनटा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हार्डवुड रे हम मैलेट इज तयारी छि मन पूरा मोटा बड़ काठरे तासे आसिला कॉपर एंड ब्रास सीटीआर हम कॉपर और ब्रास ता सीटीआर कोन ना ऑप्शन ए कहला हार्ड एंड ब्रिटल ऑप्शन बी कहला मैलेबल एंड डक्टाइल ऑप्शन सी कहला मैलेबल एंड डक्टाइल ऑप्शन डी कहला हार्ड एंड डक्टाइल हैला 5 नंबर करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर मैलेबल एंड डक्टाइल एटा मैलेबल एंड डक्टाइल एटा जोडी डक्टाइल लिखा है सेटा द करेक्ट आंसर कंफ्यूज होबनी हैला तापर आसिला 6 नंबर क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग जॉइंट इज सुटेबल फॉर रूफिंग वर्क व्हिच अमंग द फॉलोइंग निम्नलिखित को जॉइंट हम सुटेबल फॉर रूफिंग वर्क हैला ऑप्शन ए कौन कहला लैप जॉइंट ऑप्शन बी कौन कहला बट जॉइंट ऑप्शन सी कहला हैंगर जॉइंट ऑप्शन डी कौन कहला डबल ग्लोव सीम जॉइंट 6 नंबर करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर द डी डबल ग्लोव सीम जॉइंट तापर 7 नंबर जिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग टूल यूज्ड फॉर फ्लैक्टरिंग द मेटल अराउंड पंचेस होल now which among the following निम्नलिखित को टूल यूज करा अछि फ्लैक्टिंग और को मेटल अराउंड पंच को हला जो होल करिया पे जो हमें को हम यूज बॉल पिन हैमर ना राइवटिंग हैमर ऑप्शन सी कौन कहला ना सेटिंग हैमर ऑप्शन डी कौन कहला स्लेज हैमर 7 नंबर करेक्ट आंसर कौन होबो ना ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर ना बॉल पिन हैमर तब 8 नंबर जिया 8 नंबर क्वेश्चन कौन कहला which among the following types of joint is used in which the end of a sheet is placed even the end of another sheet and joint together option A कौन कहला ना lap joint option B कौन कहला butt joint option C कौन कहला knuckle off joint option D कौन कहला glove seam joint 8 नंबर करेक्ट आंसर कौन होबो A the correct answer option A lap joint That's 9 number question कौन कहला ना sheet metal work is carried out only on metal sheet which are sheet metal work carried out only metal sheet which are conversion ना cast ना roulette ना none of the above 9 number correct answer कौन होबो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर roulette तापर आसिला हम 10 नंबर क्वेश्चन जीवा 10 नंबर क्वेश्चन कौन कहला Which one of the following is common reason of using aluminum sheet? कहला which क्यों निम्नलिखित कोटा गोटे common reason माने कारण कोन यूजिंग जो करा aluminum sheet ऑन ऑप्शन ए कोन कहला ना लाइटनेस ऑप्शन बी कोन कहला ना ब्राइटनेस ऑप्शन सी कोन कहला डुलनेस ऑप्शन डी कोन कहला डार्कनेस 10 नंबर करेक्ट आंसर कोन होबो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हम जो aluminum sheet यूज करछे सेटा लाइटनेस as 11 number question कौन कहला which one of the following together is used when making job with 90 degree bend कहला क्यों टाइप रे गोटे नॉट इज माने which one of the following not is used when making job 90 degree ऑप्शन ए कहला स्क्वायर नॉच ऑप्शन बी कहला वी नॉच ऑप्शन सी कौन कहला वेयर नॉच ऑप्शन डी कौन कहला स्लैंट नॉच करेक्ट आंसर कौन पे 11 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर बी नॉट अब आसला 12 नंबर क्वेश्चन which one of the following step used when shaping and seaming tunnel and tapped article कहला which one of the following निम्नलिखित मध्ये step used when shaping of seaming tunnel and tapped article ऑप्शन ए कौन कहला हार्चेक स्टेक ऑप्शन बी कौन कहला हाफ मून स्टेज ऑप्शन सी कौन कहला फर्नेल स्टेज ऑप्शन डी कौन कहला ना क्रेजिंग स्टेज 12 नंबर करेक्ट आंसर कौन होबो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर फर्नेल स्टेज आसला 13 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेज प्रोवाइडेड a double end support निम्नलिखित मध्ये को स्टेज हम प्रोवाइडेड करछि डबल एंड सपोर्ट पे ऑप्शन ए कौन कहला ना हार्चेक स्टेज ऑप्शन बी कहला हाफ मून स्टेज
ऑप्शन सी कौन कहला क्रीमिंग स्टेक ऑप्शन डी कौन कहला हाफ स्टेक आम 13 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हॉर्स स्टेक 14 नंबर क्वेश्चन कहला द लीस्ट बेंड रेडियस vary depending on the least end radius vary depending on the option A कहला material and thickness of plate option B कहला direction of plate option C कहला warning temperature option D कहला all of the above 14 नंबर करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर सबुदिक हेबो द हला द लीस्ट बेंड रेडियस vary को डिपेंड तापर आसिला 15 नंबर क्वेश्चन कौन कहला 15 नंबर क्वेश्चन जीवा ना फॉर मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ आर्म्स एंड द सीम फ्रॉम द शीट metal thickness less than 0.4 mm the allowance should be कौन आउथरे पडिया देखो for making various type of arm and the seam from the sheet metal thickness less than 0.4 mm the allowance would be option A कौन कहला twist the thickness of sheet option B कहला ना 3 times of the thickness of a sheet option C कहला 4 times of the thickness of sheet option D कौन कहला no allow 15 नंबर करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन डी नो अलाउ ये भितर कोन जबनी नो अलाउ ही हो तापर 16 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ अ हिम ने जो कहला एटा निम्नलिखित मध्ये को टाइप रे गोटे हिम ता अछि देखो हला एटा जो अछि घर टाइप रो एटा ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए कौन कहला देखो ना सिंगल हिम ना डबल हिम ना ओयार्ड और एज ऑप्शन डी कहला लोकेट हिम हमरा 16 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर डबल हिम 17 नंबर क्वेश्चन जीवा ना व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द कैलकुलेट लेंथ जी ऑफ द ग्रोव्स जॉइंट इज कौन ऑप्शन हमर दे फिगरटा देखो से कहला व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैलकुलेट द जी हमर जो ए जी टा जो नहीं की हैला ऑफ द ग्लोव ऑफ जॉइंट एटा केते एमएम रो एबा दरकार मा फेजी 11.5 mm 12.5 mm ऑप्शन सी कहला 13.5 mm ऑप्शन डी कहला 14 mm हमर 7 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर ए जो जी टर तार लेंथ बताई 13.5 mm तापर आसिला 18 नंबर क्वेश्चन ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाईली कोरेसिव एसिड टैंक्स कहला आज बढ़िया ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में को शीट यूज करा होची मेकिंग हाईली कोरेसिव एसिड टैंक ऑप्शन ए कहला ब्लैक आयरन शीट ऑप्शन बी कहला गैल्वेनाइज आयरन शीट ऑप्शन सी कहला स्टेनलेस शीट स्टील शीट ऑप्शन डी कहला लीड शीट हमरा 18 नंबर रो करेक्ट आंसर कोन हो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर लीड शीट तापर 19 नंबर जीवा 19 नंबर कोन कहला ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द स्पेशल नॉट इज निम्नलिखित मध्ये रो ए जो नॉट ता अछि एटा को नॉट टाइप रो हला पान व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द स्पेसिफिक नॉट ऑप्शन ए कहला चेक नॉट ऑप्शन बी कहला कैस्टल नॉट ऑप्शन सी कहला स्पीड नॉट ऑप्शन डी कहला ग्रोथ नॉट हमर 19 नंबर करेक्ट आंसर का हो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर स्पीड नॉट तापर सिला 20 नंबर क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ नॉच इज नॉन पहला व्हिच टाइप ऑफ नॉच ये जो एरा देखो हमर जो ए टाइप रो नॉट टाइप को टाइप रो नॉट से पचाच देखो हला ऑप्शन ए कोन कहला देखिया ऑप्शन ए कहला स्टेनलेस नॉच स्ट्रेट नॉट ऑप्शन बी कहला होची बी नॉच ऑप्शन सी कहला स्क्वायर नॉच ऑप्शन डी कहला स्लैंट नॉच 20 नंबर करेक्ट आंसर कोन हो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर स्ट्रेट नॉच हला मोर स्ट्रेट नॉच कहला अछि 21 नंबर कहला व्हिच टाइप ऑफ मेटल शीट यूज फॉर फर्नियंस व्हिच टाइप ऑफ मेटल कोन टाइप रे मेटल शीट हम यूज करते फर्नियंस रे ऑप्शन ए कहला शीट स्टील ऑप्शन बी कहला गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील ऑप्शन सी कहला कॉपर शीट ऑप्शन डी कहला एल्युमिनियम स्टील हमर 21 नंबर करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर गैल्वेनाइजिंग स्टील तासे 22 नंबर दियो 22 नंबर कहला व्हिच टाइप ऑफ शीट
used for making a household utensil. ऑप्शन नंबर आउट पड़िया ना व्हिच टाइप ऑफ सीट क्यों टाइप रे सीट हम यूज करछे मेकिंग हाउस जो घर मान करे क्यों टाइप से ऑप्शन ए कहला सीट स्टील ऑप्शन बी कहला एल्युमिनियम ऑप्शन सी कहला कॉपर सीट ऑप्शन डी कहला गैल्वेनाइजिंग आयरन स्टील 22 नंबर करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर एल्युमिनियम अच्छा 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन what type of a sheet metal suitable for making food content है 23 नंबर क्वेश्चन वाला ना what type of sheet metal is suitable for making wood container ऑप्शन ए कौन कहला एल्युमिनियम शीट ऑप्शन बी कहला शीट स्टील ऑप्शन सी कहला टिन शीट ऑप्शन डी कहला गैल्वेनाइजिंग आयरन स्टील 23 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर टिन शीट अब आसला 24 नंबर क्वेश्चन ना which type of stage is used for folding sheet metal bending edge ऑप्शन आउटपुट पढ़िया ना which type of stage is used for folding sheet metal bending edge ऑप्शन ए कहला कोनटा ना hatchet stage ऑप्शन बी कहला स्क्वायर स्टेज ऑप्शन सी कहला ब्लो हॉर्न स्क्वायर स्टेज ऑप्शन डी कहला बेवल एज स्क्वायर स्टेज 24 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हार्ट स्टेज अच्छा आम जा 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कौन कहबा 25 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना व्हिच पीस ऑफ हैक्सो ब्लेड इज सुटेबल टू कट द शीट मेटल अते बढ़िया ना व्हिच पीस ऑफ हैक्सो ब्लेड ए हैक्सो ब्लेड इज सुटेबल कट द शीट मेटल 14 टीपीआई ना 18 टीपीआई ना 24 टीपीआई ना 32 टीपीआई 25 नंबर करेक्ट आंसर कौन होगा ना ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर ऑप्शन 32 टीपीआई तापर आसीबा 26 नंबर को जीवा 26 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना द थिकनेस ऑफ द मेटल इज इन शीट मेटल व्हाट एबव 5 mm इज कॉल्ड अच्छा बढ़िया now the thickness of the metal is in sheet metal what above 5 mm is called it ऑप्शन ए कौन कहला sheet ऑप्शन बी कहला plate ऑप्शन सी कौन कहला strips ऑप्शन डी कहला poles 26 नंबर करेक्ट आंसर कौन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर plate हैला तापर जीवा 27 नंबर क्वेश्चन की 27 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इज फिगर पहले देखो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा प्राय क्वेश्चन ने रिपीट क्वेश्चन करूची हैला हम एटा ये जो पचाला ये जो टूल रो नाटा कोन ऑप्शन ए कौन कहला ना साइड कटिंग प्लायर ऑप्शन बी कौन कहला ना कॉम्बिनेशन प्लायर ऑप्शन सी कौन कहला ना बिंग स्पिन ऑप्शन डी कौन कहला स्टेन स्टिक देखो यार 27 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम 27 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर स्टेट स्पाइन तापर जीवा तापर आसला 28 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना व्हिच टूल इज यूज फॉर कटिंग थिन शीट ऑफ मेटल व्हिच केउन टूल हम यूज करा छै कटिंग थिन शीट ऑफ मेटल हैला ऑप्शन ए कौन कहला ना कटिंग प्लायर ऑप्शन बी कौन कहला स्टेट नाइफ ऑप्शन सी कौन कहला फ्लैट नोज प्लायर ऑप्शन डी कौन कहला ना चीज हमारा 28 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर स्टेनलेस स्टील तापर आसीबा हम 29 नंबर क्वेश्चन जी 29 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना व्हिच टाइप ऑफ शीट मेटल इज मोस्टली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाउस होल्ड utensil ऑप्शन आउट पड़िया ना which type of a sheet metal is mostly used for manufacturing household things कौन टाइप हम sheet metal मोस्टली हम यूज करछ मैन्युफैक्चरिंग घर माने ना टिन प्लेट ना जीआई शीट ना कॉपर शीट ना एल्युमिनियम शीट 29 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर का होबो हम 29 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर एल्युमिनियम शीट तापर जीवा हम 30 नंबर क्वेश्चन पर एटा लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिबा
The operation of bending a sheet of a metal along the circular axis is known as ऑप्शन आउते बढ़िया ना कौन कहला the operating sorry the operation of bending a sheet of metal along the circular axis known ऑप्शन ए कहला plugging ऑप्शन बी कहला nothing ऑप्शन सी कौन कहला ना sliding ऑप्शन डी कौन कहला ना forming 30 नंबर करेक्ट आंसर कौन हबो 30 नंबर करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर फॉर्मिंग हबो लाने हमरा जी एशियन बुक रो हमर एती क्वेश्चन थिला आज हम दीटा चैप्टर गढेली हमरा प्रथम चैप्टर हमरा कार्पियन आ हमरा असला सेकंड चैप्टर बा हमर 3 नंबर चैप्टर जो थिला से कार्पियन आ 4 नंबर क्वेश्चन अछि शीट मेटल को वार हम आज दीटा चैप्टर शेष होले हमरा बहुत कम कम क्वेश्चन थिला किंतु प्ले माने एटा जे एटा कम कम क्वेश्चन थिला सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन होरा थिला हला एथु प्राय देखन सब हमरा आईटीआई फेब्रुआरी 2015 आस्थिला ये 2000 सब फेब्रुआरी 2000 आईटीआई क्वेश्चन आईटीआई लेवल पाई एवं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन तब हम देखिबा हमरो 3 4 नंबर को चारटा चैप्टर शेष हला एवं काली 5 नंबर चैप्टर धरि के एसीबी आ केमिति लागिला जदी टिके स्पीड हे जाउची ताल तमे 0.5 रे देखि परिबो आ केमिति लागला तम सांग मान को शेयर करो आ हमरो एशियन बुक रो हम सब चैप्टर टारगेट करबा जे कंप्लीट करबा हेला आ लाइक कमेंट शेयर जहां भी डाउट अछि कमेंट रे शेयर भी करि परिबो आ मोर आज सेति की रखुजी 50 टा क्वेश्चन हमर एटा छला 20 टा क्वेश्चन फास्ट आ हमर असला शीट मेटल 30 टा आज टोटल 50 टा क्वेश्चन शेष हला हो थैंक यू एतिकरे हमें रखुजे